if you're saying that there's an issue regarding the rate of education within your area, within your sector, तो आप उसके लिए क्या एक सोल्यूशन बना सकते हो? उसके रिगार्डिंग आप ऐसे सोल्यूशन बना सकते हो कि यू क्रिएट एन एप्लीकेशन दैट मेक्स एजुकेशन मच मोर एक्सेसिबल टू पीपल जिनके लिए स्कूल जाना मुश्किल है। तो इस तरीके से द सोल्यूशन चैलेंज इज डिज़ाइन कि आप ऐसी अपने इश्यूज उठाओ जो कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मेंशन है। You observe those issues within your environment, within your country, within where you live, and आप फिर सोचो कि अच्छा ठीक है, what can I do to make this situation better? हम किस तरीके से इसको solve कर सकते हैं through a technical solution. So that is what the Google Solution Challenge is. So if we sort of get a rundown, get what the project timeline is, सारी इसकी situation कैसी होगी. So you'll be working in teams of 4 if you do participate, and within that team of 4 you'll be dividing the work in such a way कि आप एक तो idea अपना select करोगे कि किस तरीके से किस चीज़ के ऊपर आपने काम करना है, what your solution basically will be. You will be documenting the entire idea in a way कि आप requirements निकालो, okay ठीक है, if we're making an application for something, आप कौन सी चीज़ों को उसके अंदर केटर कर रहे होगे, आप कौन सी चीज़ों को मतलब बेसिकली आप कौन सी चीज़ों को टैकल करोगे, हाउ आर यू गोइंग टू टैकल दिस, व्हाट फीचर्स आर यू गोइंग टू इंक्लूड विद इन योर solution, within your application, within your website, right? And then uske baad you will be designing and developing that solution. And you'll be doing this as we could see in the timeline कि January अभी recent जो भी है, the solution challenges registrations have opened and you have towards till the end of March, so basically till March 31st जिसके अंदर आप अपने solution develop कर सकते हो with your team. You finish all of the deliverables and then you submit your solution for phase 1. After you've submitted your solution for phase 1, उसके अंदर the first evaluations take place. So what happens within the first evaluations is that throughout the globe, जहाँ से भी लोगों ने submit कराया, उनमें से some teams get shortlisted. So this year, top 100 teams जो हैं, they will be shortlisted for the initial round, right? Usually इससे पहले top 50 teams का होता था scene, इस दफ़ा they're working towards top 100 teams. उसके बाद you guys will be getting mentorship from Google developer experts and mentors within the Google team. So basically those people will be telling you and they'll be helping you out कि अच्छा आप किस तरीके से जो अपना solution बना रहे हैं, how you're going to make that better, right? And then after that you go towards round 2 of evaluations and then top 10 and then top 3 उसके अंदर से winners choose होते हैं. So एक second. After that, we'll talk about impact and technology के basically criteria वगैरह क्या होता है. So before we talk about what impact really is, just to make this session a bit more interactive, I want to ask you guys कि आप अपने इर्द-गिर्द जो surrounding है, environment है, उसके अंदर are there any issues that you've seen, you faced yourself that you think कि यार इसके ऊपर कोई ना कोई technical solution present होना चाहिए जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें शायद हेल्प हो, या ऐसी कोई चीज़ जो ऑलरेडी बनाई गई हो जो दैट इज हेल्पिंग यू आउट. तो इफ यू हैव समथिंग इन माइंड, डू write that down in the chat. For instance, let's say an example I can give is, और ये बहुत broad scope example है, फाइनल्स आ रहे हैं तो हम लोग का मेन बेसिक ये सीन होता है कि हम यूट्यूब, कोई भी यूट्यूब चैनल रात को आप उठाओ, वीडियो निकाल रहे हो, आप उसमें से यूट्यूब वगैरह वीडियोस देख के आप रात को कवर कर लेते हो जो फाइनल का सिलेबस है. तो दैट्स एन इशू वेयर वी सी के यार एजुकेशन की एक वो आप कह सकते हो क्वालिटी नहीं है, एंड द सोल्यूशन दैट वी हैव इज द यूट्यूब वीडियोस. So similarly, do you think is there any issue that you've noticed within your surroundings that you believe could be tackled via technology? So if so, do write that down within the chat and then we'll move forward after that. Alice, इतना तो चलता ना कुछ say there's any proper solution except for saying कि आप साइबर सिक्योरिटी वगैरह, साइबर जो आपकी क्राइम है उनको अटैक करो. So yes, exactly. You could say submitting a solution. First of all, creating a problem statement.
द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली द थिंग जिसके ऊपर आपकी बेसिस होगी पूरी सोल्यूशन की. So when I say कि education is not worth it over here, quality of education ठीक नहीं है, maybe you could say there are hindrances within students getting educated. A lot of your population isn't in schools. So the problem statement over here is जब मैं कहती हूँ कि a good significant part of your population is out of school. That is the problem. So, who, what, where, and why? Who? A significant part of the population. What is the problem? They're not getting educated. They're out of school. Where? Within Pakistan. And why is this a problem? Now, the why is the most important thing because that means आप उसके through ही judge कर सकते हो कि हम जो solution present करते हैं वो work कर रहा है कि नहीं. For instance, we could say that poverty is a big issue. लोगों के पास इतनी income नहीं है कि वो अपने बच्चों को schools भेज सकें. Or we could say that there is a transit issue. People say that rather than sending their kids to school, it's better timeline checklist. So getting started, you have your sustainable development goals, you have the solution, the problem that you've identified, and then आप उसके दिमाग में आपके पास एक solution है. After that, what you'll start is you'll start building your solution. अब बिल्ड के अंदर क्या आता है कि देर आर वी गोइंग टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजिकल साइड. आप उसके फ्रंट एंड डिजाइन करते हो, देन यू गो टूवर्ड्स द बैक एंड डिजाइन. तो front end, the interface, how this user is going to interact with that, because that is a very important part. कितना efficient वो चीज़ होगी कि अगले बंदे को इस्तेमाल भी की जाती है या नहीं. And then back end technology is very important as well because that ultimately creates the entire proper जो आपका सिस्टम फ्लो ऑफ जो भी आपका डेटा वगैरह होगा, जो आपका काम फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही होंगी, दैट्स थ्रू योर बैक एंड, राइट. उसके बाद you'll be testing your solution and then you'll be sort of iterating that. Now what does iteration mean? जब भी आप किसी चीज़ को डिज़ाइन या डेवलप कर रहे होते हो, आप एक सिस्टमैटिक फ्लो के अंदर अब ऐसा काम नहीं होता. What happens is that you try making something, you test that out, you find the issues, you go back, you make the changes, and then that happens again and again and again until you believe कि अच्छा ठीक है, जो हमने चीज़ बनाई है, that's the best that we could do for the time being. After that, we'll go towards the submission, and then submission के बाद obviously जो top 100 announce होंगे, and then the mentorship and everything happens. So, there are some, you could say, restrictions or boundaries regarding the solution challenge that you need to take care of. First off, is the solution that you're catering to should be from the 17 Sustainable Development Goals. And when we talk about the Sustainable Development Goals, I'll give you a bit of an idea regarding that. अब उसके अंदर क्या होता है कि when you talk about the Sustainable Development Goals, they have some targets. Targets are the things that what the UN wants to achieve when they're discussing that sustainable development goal, right? So I'll give you an example. Give me a second. Yes. Basically, you could choose the issues from, right? Second. Okay, yes. So these are the SDGs. उसके अंदर आपके पास आ जाती पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ. अच्छा, अब फॉर इंस्टेंस अगर आप, जैसे मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि आप अपने सराउंडिंग एरियाज को भी इसके अंदर कंसिडर करते हो. So when you talk about something such as clean water and sanitation, recently Pakistan was struck by floods, and floods के related अब बहुत सारे issues आपके पास आ जाते हैं. And one big issue is the lack of clean water and the lack of sanitation. Water related diseases skyrocket तरीके से you can obviously work for something जो कि आपकी इस फ्लड की सिचुएशन को भी केटर कर सके. कोई आप ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई आप ऐसी एप्लीकेशन बनाओ जो कि आपकी इस, फॉर एग्जांपल, लेट्स सी द इंडिकेटर्स, जो इसकी टारगेट्स वगैरह हम उसके थ्रू उसको कंपेयर कर सकते हैं. Right. When we talk about targets and indicators, first of all, is that everyone has equal access to affordable drinking water and enough hygiene, or जो कि आपके especially the needs of women and girls in vulnerable situations,
improve water quality by reducing pollution, and then water efficiency आपकी हो. अब ये सारी चीज़ें you need to relate this to where you're living up. For example, when you talk about water efficiency and availability of water, you can consider फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट सिंध के अंदर वो डेजर्ट्स वगैरह जो हैं वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी का इशू होता है एंड देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम मेड जिसके अंदर वो पानी अवेलेबल हो. तो ऑब्वियसली व्हेन यू look at these specific targets आपके पास अच्छी खासी problem statements निकल आती हैं and then through those problem statements it's quite easy to think of a solution, to think of a way कि आप उसको tackle कैसे कर सकते हो. तो इसी तरीके से you need to structure whatever you could say solution that you're creating and just make sure कि जो solution है it fulfills some sort of targets and it also fulfills the SDG. उससे बाहर नहीं निकल सकता ये solution जो भी है. ठीक है. Moving back towards the presentation. एक second. Yes. So after that, so other things that include, acha, one person can only submit one solution. So you're only part of one team. आप multiple teams के साथ नहीं काम कर सकते. And it's very important that you're a part or you're a member of a local GDSC. So, for example, जो हम लोग का GDSC का community page होता है, if someone from the team can also drop the link in the chat, you have to be a member of that GDSC community just so that you could submit your solution because this competition is specific to these and the associated members. And lastly, with implications of social distancing and any sort of issues such as that, COVID pandemic related है या in specific areas, for example, there are students that are from flood stricken areas, उसकी वजह से there are issues when it comes to meeting people like on site. So they will be considering those things in mind when you're submitting your solution. Whenever these like you just need to do your best in that situation. आप उस चीज की टेंशन ना लो कि यार ये हमारे issues थे and all that. We had to tackle those as well. They will be considering those factors when you're submitting your solution. And I will be sharing these slides as well. So there are previous solution challenge के जो हमारे पास winners है. We have tutorial videos as well कि आप किस तरीके से efficiently अपनी ideation, अपनी designing, अपनी development इन सारी चीज़ों को cater कर सकते हैं, right? अच्छा, you need to make sure you need to try your best कि आप किसी ना किसी Google technology को integrate करें within your solution. अब किस तरीके से आप कर सकते हो? For example, if you're creating a cross platform mobile application, you can easily develop that via Flutter and Dart. If you're wanting to use a Google Cloud platform to deploy your project या जो भी आपने website वगैरह चीज़ बनाई, you can use GCP for that. You can use Firebase as a backend if you're developing a website, ठीक है? तो or Android if you're making an Android application. So be sure or try your best to use a Google technology because towards the end of the day, you need to consider yes, this is the Google Solution Challenge. So they would be wanting to promote their technology for the impact that you're trying to create. And yes, so to so the second can start. So a bit of introduction. Samia Afzal Minhas, she was the lead last year and she participated within the Solution Challenge, I believe in the I think it was 2020 to 2021 वाले जो years थे, they participated, a team from UGTech and she was the lead for the team. They participated and their project basically it catered towards mental health, towards the mental health side of SDG. Can continue the talk from here. Assalamu alaikum. I hope you all are doing great today. Thank you for joining. And since Askan ने काफ़ी सारी details already share कर दी हैं, so I will I think most of you know me, and if you don't, I'm Samia from Software Engineering Department, and currently I am in 7th semester. Uh, is from 3rd semester. किया था, I didn't have a lot of technical skills,
But when I saw okay, there is a challenge going on, so I applied and I tried to give it a go. Marks मिलते नहीं थे, but it was still a very good experience for me. So, just a moment, guys. सॉरी गाइस. ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ पहले. ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन शो हो रही है? Yes, it's visible. Okay, so 11th जनवरी को एज अस्का said solution challenge registrations open हो गई थी and 18 जनवरी को they have a kick off. आप सब ने उस किक ऑफ के लिए रजिस्टर किए? Just unmute your mics and kindly मुझे बताएं. If not, I'll send a link. और I want all of you to register first because वो meeting will actually get a very good insight into the challenge. In meeting chat right now. ओके तो एज उसका सेट के जो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, शी गिव अ प्रीटी गुड ओवरव्यू. मैं एक और आपको बता देती हूँ कि जो आपका सोल्यूशन चैलेंज है, यू हैव टू मेक श्योर कि वो इन 17 गोल्स में से ही किसी एक गोल के अंदर लाई करता हो. ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अगर कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो वो एक से ज़्यादा गोल कवर कर रहा होता है. जैसे दे हैव एग्जांपल प्रोजेक्ट्स मेंशन्ड हियर. अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? Yes, show हो रही है. Okay, so this is an example project skill lab जो zero hunger को भी cater कर रहा है. The same project is also catering the gender equality goal. The same project it's also catering the quality education goal. तो it is possible कि अगर आप एक solution बनाते हो तो एक से ज़्यादा गोल्स को भी कॉम्प्लीमेंट कर सकता है. इट्स नॉट के मतलब इट्स नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल कि वो सिर्फ एक ही गोल को कैटर करना चाहिए. बट येस, जो आपने सोल्यूशन सबमिट करना होता है वो सिर्फ एक ही सोल्यूशन पर टीम आप सबमिट कर सकते हो. तो ये जो 17 गोल्स हैं, आई एम ऑल्सो शेयरिंग द लिंक विद यू गाइस क्योंकि इस पेज पे सारे गोल्स मेंशन्ड है और उस गोल्स के जो एग्जांपल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मेंशन्ड है एंड इनकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू कि आपने सबसे पहले देखना है कि आउट ऑफ दीज 17 गोल्स आप किस गोल पे काम करना चाहते हो, किस प्रॉब्लम को आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अपने कंट्री में या अराउंड यू, और फिर आपने उसमें से डिसाइड करना है कि इसमें से किस पे आप काम करना चाहते हो. वंस यू हैव डिसाइडेड योर प्रोजेक्ट, फिर आपने क्या करना है, द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज टू फॉर्म अ टीम. सबसे पहले आपने टीम बनानी है एंड देयर आर अ फ्यू टिप्स आई वांट टू शेयर फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि आपने टीम किस तरह से बनानी है. तो इट कैन बी अप टू 4 मेंबर्स और यू हैव टू सेलेक्ट वन टीम लीड फॉर दैट. तो अगर आपने इनिशिएट किया एंड यू आर द टीम लीड एंड यू हैव टू select 3 more people for the team and make sure कि जो आप team select कर रहे हो all of you have different skills. अगर आप developer हो, make sure the other team member is a designer, फिर the next team member they have other specific skills. Don't do कि आप 4 अगर members हो तो आप चारों के चारों एक ही skill पे काम करते हो because you need different skills to make a solution. ठीक है, तो please make sure कि इस तरह ना करें कि आप जो सारे के सारे members हैं वो एक ही domain में काम करते हो. एंड सेकेंडली इट्स नॉट लाइक कि अगर आप
20 सेशन से हो या आप 21 सेशन से हो, तो आपने अपने रिमेनिंग जो टीम मेंबर्स हैं वो भी उसी सेशन से सेलेक्ट करने हैं. यू कैन इवन सेलेक्ट योर टीम मेंबर्स फ्रॉम 22 सेशन, यू कैन सेलेक्ट योर टीम मेंबर्स फ्रॉम 21 सेशन. तो इस टाइप की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, तो यू डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू योर सेशन ओनली. ठीक है. अच्छा गाइस, प्लीज़ कीप इट मोर लाइक एन इंटरेक्टिव सेशन, बिकॉज आप लोग मुझसे क्वेश्चंस अगर करते रहेंगे आई विल कीप आंसरिंग देम फॉर यू, क्योंकि इस तरह से इट्स वेरी फॉर्मल और आई माइट लीव आउट सम डिटेल्स. अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चंस हो आई माइट नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई देम माई सेल्फ. तो प्लीज़ मेक इट एन इंटरेक्टिव सेशन. ठीक है. किसी ने कोई बात करनी है, दे कैन स्टॉप मी, दे कैन अनम्यूट एंड लेट मी नो. ऑल्सो जो मेरा सोल्यूशन था, आई वॉन्ट टू शो यू कि मैंने किस पे काम किया था. Just to give you an idea of what kind of a solution I submitted. Again, I'm telling you that I didn't win or didn't make it to the top 50 teams, but yeah, it was a very good experience for me overall. अच्छा, मेरी screen share हो रही है? Yes, हो रही है. Okay. तो basically मैंने जिस sustainable goal पे काम किया था, it was this, the third goal, good health and well-being. And मेरा जो project का आइडिया था वो ये था कि अलॉन्ग साइड विद फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना चाहिए, जो पाकिस्तान में इन माय कंट्री फोकस बिल्कुल भी किया जाता. योर मेंटल हेल्थ इज डिग्रेडिंग, यू हैव नो हेल्प अराउंड एंड यू कि आप स्ट्रेस्ड हो. व्हेन यू टेलिंग योर फ्रेंड्स कि यार मैं इस बात से स्ट्रेस्ड हूँ, मैं परेशान हूँ, नोबडी इज टेकिंग यू सीरियसली, राइट. ऐसे कभी हुआ है किसी के साथ कि आप किसी फ्रेंड से, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड हो या बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर हो, आप उसको जाके बता रहे हो यार मैं ना इस तरह से इमोशनली स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उन्होंने आगे से इस बात का मजाक बना दिया हो या उन्होंने सीरियस ना लिया हो. इट हर्ट्स अ लॉट, राइट. ऐसा आई एज्यूम हुआ होगा, मतलब इट्स वेरी कॉमन अराउंड अस. रेड अबाउट यू. सो वी वर्कड ऑन अ फोरम. इट वाज अ वेरी सिंपल फोरम back when I was in third semester, because again we didn't have a lot of relevant skills. तो इसमें क्या होता था कि you could write your problem here anonymously, and then उसके बाद the other people who were using the same forum वो वहाँ पे अपना comment कर सकते थे. So you could communicate with people globally and you could share your problems with them and you could help each other out as a community. ये मेरा basically project था. ऑल्सो इफ़ यू हैव अ लुक, मैंने एक और आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, स्किल लैब. स्किल लैब इज़ अगेन वन ऑफ द सोल्यूशन चैलेंज पार्टिसिपेंट्स. इन्होंने जो प्रोजेक्ट सबमिट कराया था, इट वॉज के दिस प्लेटफॉर्म एक मोबाइल एप्लीकेशन थी. दे यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और ऐसा था कि जब आप ग्रेजुएट कर लेते हो या इवन इफ यू नॉट ग्रेजुएटेड, व्हेन यू लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज. अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? Yes, ओके. yes, आ रही है. तो इट वॉज एन एप्लीकेशन जहाँ पे दे यूज AI, और AI यूज़ करते हुए वो आपके स्किल्स, आपके इंटरेस्ट, और आप अगर फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, करियर में, तो वो आपको अल्टीमेटली जो सजेस्ट करता था आपके अराउंड ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है, यू शुड अप्लाई हेयर, यू शुड डू दिस सर्टिफिकेशन. तो इट वॉज ऑल AI बेस्ड एप्लीकेशन. दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द विनिंग प्रोजेक्ट्स. तो आपने आपके इम्पैक्ट के होंगे. तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी सोल्यूशन डिज़ाइन करते हो उसका इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. एंड इट्स वेरी गुड कि अगर उसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे हो. ठीक है. सिमिलरली दिस इज़ अनदर एप्लीकेशन. आई एम नॉट श्योर ये किस कंट्री का प्रोजेक्ट है, बट इनका प्रोजेक्ट ये था कि यू सी क्रॉप्स होती हैं, फार्मर्स दे आर वर्किंग ऑन क्रॉप्स एंड मंथ्स की एफर्ट होती है, राइट. तो इस तरह भी हो सकता है कि कोई बैड वेदर की वजह से या किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से सारी की सारी क्रॉप्स वेस्ट हो जाएं. होता भी है. पाकिस्तान में भी फ्लड्स आए थे, सो वी नो दिस हैपन्स अ लॉट. तो जो इसकी एफर्ट होती है इट गेट्स वेस्टेड, बट ऑल्सो इसकी जो कॉस्ट पड़ती है, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट. तो दे मेड अ सिस्टम के जो क्रॉप्स हैं और जो फील्ड्स हैं उनके जो स्टैट्स हैं ये मेंटेन कर रहे थे. और उस स्टैट अच्छा, मेरी स्क्रीन अभी भी शो हो रही है ना, बिकॉज आई एम स्विचिंग टैब्स, तो आई वांट टू मेक श्योर कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है. Yes, हो रही है. ओके. तो
This solution challenge demo day 2021 project flow. So flow नाम का एक प्रोजेक्ट था. इस प्रोजेक्ट में उन्होंने क्या किया था कि इन देयर कंटेंट कि हमारे पास वाटर, they used Google Maps and AI and Google Assistant to find clean water spots nearby. तो see ये simple ideas हैं. They've been using some technologies और they're winning the solutions, right? Solution challenge को मतलब they're nailing it. So जो problems हैं they're very simple and solutions are also very simple. You just have to know कि आपने किस idea पे काम करना है. It doesn't have to be a very extraordinary idea. It has to be an effective idea. ठीक है? ये मैं एक लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ. इस लिंक में 3 प्लेलिस्ट गिवन है. डेमो डे फॉर 2022, 21 एंड 20. तीनों सालों के जो डेमो डेज थे उनके जो विनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट हुए हैं. तो अगर आप में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो डू गो थ्रू दीज लिंक्स दैट आई एम सेंडिंग. इसमें जो आप यूज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि आपने सारे के सारे टेक्नोलॉजीज़ ही गूगल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी है. If you're using a lot of other softwares or programming languages or platforms, it just have to be कि आपने at least one Google technology उसमें use करनी ही करनी है. If you're making an app, you can use Flutter. अगर आपको database चाहिए, you can use Firebase. अगर आप कोई cloud based project कर रहे हो, you can use cloud services. अगर आप कोई navigation या GPS को use करते हुए, जिस तरह जो flow project मैंने आपको अभी दिखाया उसमें they were using Google Maps. ठीक है. अगर आप कोई deep learning या AI बेस्ड प्रोजेक्ट करें, यू कैन यूज टेंसरफ्लो. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप प्रोजेक्ट कौन किस टाइप का बना रहे हो. एंड जो भी रेलिवेंट टेक्नोलॉजी गूगल की ये मेंशन है, इट्स एंड्रॉयड, क्रोम ओएस, क्लाउड, फायरबेस, फ्लटर, इन सब में से आप यूज कर सकते हो. अब नाउ आई माइट गेट अ, तुम लोगों ने पूछना नहीं है, शर्माते तुम लोग बहुत हो. मैं खुद ही टेक्नोलॉजीज हमें आती नहीं है, हम कैसे बनाएंगे, राइट? अब जो गूगल की टेक्नोलॉजीज हैं इसमें इनके जितने भी टेक्नोलॉजीज इन्होंने दी हुई हैं, बेसिकली इसके जो डॉक्यूमेंटेशन, इसके कोर्सेज यूट्यूब पे, यूडेमी पे, कोर्सेरा पे, और इनकी रिटन डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है. और गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली इनकी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी इजी भी है. सिंस करेंटली मैं भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ एंड द डॉक्यूमेंटेशन इज एक्चुअली क्वाइट इजी. तो इट्स नॉट लाइक कि आपके पास अगर स्किल्स नहीं है तो यू कैन नॉट make a solution. You can, because you can follow the documentation and the tutorials very easily क्योंकि आपके पास 2 months है. and it's also not about just winning. You should participate क्योंकि जब मैंने किया था I was in 3rd semester और मुझे तब बहुत ज़्यादा नहीं आता था. तो that's one thing. अच्छा, any questions so far? Any questions so far? Looks like no questions. ठीक है. तो the next thing I want to talk about कि आपने जब एक टीम बना ली है, how you have to manage day-to-day activities. अच्छा, I have a question. Do we need to completely implement the project? If it's incomplete, can we submit it? No, हमाद, आपको एक complete project बनाना होता है. अगर आप कोई app या web app बना रहे हो, it needs to have both front end and back end as well. आपको वो कंप्लीट बनाना होता है एंड 2 months इज़ अ गुड टाइम टू मेक अ कंप्लीट प्रोजेक्ट. ठीक है. अगर वो इनकम्प्लीट है, यू कैन सबमिट इट, बट देर आर वेरी फ्यू चांसेस और नो चांसेस कि यू वुड मेक इट टू द टॉप 100 टीम्स. तो ये बात है. विच टूल्स? हमारे जो वेब ऐप थी, हमने बेसिकली जो गूगल टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, हमने फायरबेस यूज़ की थी. इसके अलावा आवर वेबसाइट वाज मेड फ्रॉम रिएक्ट जेएस. अगर आप ये वेब ऐप बना रहे हैं, यू कैन. It was like locating baby daycares using Google Map. Mm-hmm. Yeah, similar projects हो सकते हैं, but there should be some good innovation in the new idea. It's not like reciprocating the idea, but yeah, if it's good enough, you can make it to the top 50 teams. और up to top. It's okay, guys. आप लोग unmute करके you can just talk and you can ask questions if you want to.
Okay, so Rida Shabir has a question. And as you mentioned that if you don't have enough skills right now, you can still give it a try, but I'm still concerned from where I should start. Rida, first of all, make a team up to 4 people. You need a developer, you need a designer, you need a content writer, and you need one person to manage डे टू डे एक्टिविटीज़ एज वेल, ठीक है? तो सबसे पहले एक टीम बनाओ, उसके बाद उस टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रखो। उन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में आप डिसाइड करो कि 17 गोल्स में से आपने किस गोल पे सोल्यूशन प्रेजेंट करना है, एंड देन थिंक अबाउट कि क्या बनाना है, एप्लीकेशन बनानी है, वेब ऐप बनानी है, ठीक है? देन थिंक कि किस तरह से बनानी है, एआई यूज़ करके बनानी है, या हमने कोई नेविगेशन की टर्म्स यूज़ करनी है, या हमने कोई क्लाउड सर्विसेज यूज़ करते हुए बनानी है। अब ये वो आप तब डिसाइड कर पाओगे जब आपने अपना जो आइडिया है वो फाइनलाइज कर चुकी होगी। सो इस तरह से आपको स्टार्ट करना है, एंड देन वंस यू फाइनलाइज कि अच्छा मैं एक ऐप बनाऊंगी, आई विल बी यूजिंग फ्लटर ये, तो देन दिस डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्यूटोरियल्स अवेलेबल, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। इट्स दैट सिंपल, एंड 2 months इज अ गुड टाइम। और 11 जनवरी को इट वाज अनाउंस्ड, एंड उसका अरेंज्ड एन इवेंट एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। फाइनल्स किस किसके हैं? ये भी इतने होंगे कि 22 के साथ ही हमारे होंगे। तो फाइनल्स के फ़ौरन बाद, फाइनल्स से पहले पहले यू कैन मेक अ टीम, आप लोग अपनी टीम फाइनलाइज कर सकते हैं। आप लोग देन राइट आफ्टर फाइनल्स, दिस इज द ओनली वे ऑनेस्टली। और एक चीज़ आई लाइक, इन कल भी इसके ऊपर सेशन है, जिसके उनकी पिछले साल टॉप 50 में आई थी टीम, देयर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, एंड उनकी सिचुएशन भी यही थी कि जो जैसे रिदा लाइक यू सेड के स्किल्स शायद उतनी नहीं है इतनी, they didn't really know how to develop stuff in Flutter, but alongside the way when they were developing their solution, उन्होंने साथ साथ Flutter सीखी from scratch, और फिर उन्होंने solution बना के submit भी करवा दिया। तो to say कि आपको developer नहीं आती, आप उस चीज़ से ना डरो, आप साथ साथ चीज़ सीख सकते हो। If you टीम, आई थिंक उसके अंदर आप काम इस तरीके से एफिशिएंटली डिवाइड कर सकते हो कि आप लोग मिल के भी आगे सीखते जाओ, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ वेयर यूर लैकिंग आप अगले बंदे से साथ साथ सीख सकते हो। एंड अब तो आई थिंक अब जैसे GDSC की अपनी कम्युनिटीज़ हैं, उसके अलावा काफ़ी और ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जस्ट फॉर दीज टेक्नोलॉजीज, आप वहाँ से भी अच्छी खासी गाइडेंस ले सकते हो फॉर दैट। अभी जब मैंने अपना FIP डिसाइड करना था, सो आई वेंट एंड मैंने देखे प्रोजेक्ट्स जो जो भी अवेलेबल थे, वो प्रोजेक्ट्स इतने न्यू थे। मैंने कहा सर को, सर ये जो प्रोजेक्ट सारे मेंशन्ड हैं, दिस इज़ नॉट व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस 3 ईयर्स, तो अब हमने क्या करना है? तो सर ने कहा, मैंने कहा सर मैं अगर चले लेट्स से मैं ये FIP कर भी लूँगी, तो मुझे तो ये सब कुछ आता ही नहीं है, तो व्हाई आर यू एनकरेजिंग मी कि मैं ये वाला करूँ? मुझे कुछ भी नहीं आता इसके बारे में। एंड देयर वाज एन इलेक्टिव जो कि मैं पढ़ के कुछ ना कुछ कर ही लेती, बट वो इलेक्टिव भी हमें ऑफर नहीं हुआ। तो मैंने कहा सर अब मैं किस तरह करूँगी? तो ही सेड, मेरे सुपरवाइज़र, मैंने खैर उनको सेलेक्ट तो नहीं किया था, बट ही सेड कि द बेस्ट वे इज़ टू डू अ प्रोजेक्ट। अगर आपने कुछ सीखना है तो द बेस्ट वे इज़ कि आप प्रोजेक्ट करो और यू लर्न अलोंगसाइड, बिकॉज दैट्स हाउ इट गोज़। इट्स नॉट लाइक कि आपको अलग से कोर्सेज करने पड़ेंगे पहले, उसके बाद ही आप कुछ बना सकते हो, ऐसा नहीं है। तुम लोगों ने कभी वो यूट्यूब पे जाके तो HTML ट्यूटोरियल देख के वेबसाइट नहीं बनाई एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके कोड? सच सच बताओ मुझे। मतलब मेरा जो HTML का प्रोजेक्ट था, व्हाट आई डिड, HTML तो खैर चलो ईजी थी, बट फर्स्ट सेमेस्टर में उस टाइम मुश्किल लगती थी, तो आई वेंट, मैं यूट्यूब पे गई, मैंने वहाँ पे बनाई है, अब्दुर्राफ़ी ने बनाई है। वहाँ पे मैं गई, मैंने देखा हाउ टू मेक अ वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS, और मैंने वो जो कोड करा था, मैं वो अपने VS कोड पे कोड करी थी, एंड दैट्स हाउ आई मेड अ गुड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इट्स नॉट कि स्किल्स नहीं आए तो किस तरह से हम करें, ये वो हो जाता है। आई ऑल्सो सॉ अनदर क्वेश्चन के एक यूनिवर्सिटी से मल्टीपल टीम्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, एंड इट इज़ रिकमेंडेड कि होनी चाहिए। तो एंड यू हैव टू मेक टीम्स अप टू 4 पीपल, 4 से कम भी हो सकते हैं, बट इफ़ यू हैव अ कैपेसिटी ऑफ 4, तो ट्राई करो कि 4 पीपल की बना लो, बिकॉज देयर इज़ वर्क टू डू एंड यू विल नीड हेल्प। मेरी स्क्रीन शेयर बिल्कुल हो रही है, ये देखो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि इस साल व्हाट आर द रिवॉर्ड्स। तो 100 टीम सेलेक्ट हो जाती हैं, यू विन अ टी-शर्ट, मेंटरशिप फ्रॉम गूगल एंड अदर एक्सपर्ट्स
and submit a solution for the top prize. ठीक है, अगर आप top 10 में finalize होते हो, you get $1,000 cash prize per team member, and you also get featured in the Google Developers blog और Global Demo Day पे भी you also get featured. ठीक है, Google Expert के साथ आपको mentorship भी मिलती है, swag and a certificate, which is a very good tweak. ठीक है, which is a very good. Even if you don't make it to the top 3 winners and you make it to the top 10 finalists, it's still a very good go. ठीक है, and then top 3 winners you get $3,000 cash prize and all the other swags mentioned. So guys, matlab it's definitely worth giving it a try. Any questions so far? Mic unmute करके बोल लो. It's totally fine. है ना? $1,000 is like very good. Yes, Hamad, I agree with you. So any other questions? तो जिसने पार्टिसिपेट करना है आप लोग अस्का को बता दीजिएगा. अस्का विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप और उसमें आप सबको ऐड कर देगी और वहाँ पे वी कैन कीप इंटरेक्टिंग, हेल्प आउट कर सकते हैं एक दूसरे की, वी कैन टॉक, गिव आइडियाज टू ईच अदर. ठीक है, तो प्लीज़ बी एक्टिव एंड प्लीज़ बी वेरी ओपन टू न्यू आइडियाज एंड न्यू पीपल अराउंड यू. अस्का कल का हमारा क्या एजेंडा है? Yes, so giving some details कल के सेशन के लिए. अभी we're just finalizing the time वगैरह, तो but we'll be sending the link in the WhatsApp group or community page. अगर आप लोग join कर लो तो उधर भी notification आ जाएगी. And basically we're inviting the team from the University of South Asia. Last year उनकी top 50 के अंदर team आई थी. They made an app regarding dyslexia. And I don't think many people would know what dyslexia is, which is basically the thing they were tackling, जो impact वो create करना चाह रहे थे. तो लास्ट ईयर की जो उनकी टीम, दिल बी टेलिंग यू फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश कि उन्होंने प्रोजेक्ट का आइडिया कैसे चूज़ किया, उसके बाद डेवलपमेंट की चीज़, डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग, सारी चीज़ों को कैसे उन्होंने डिवाइड किया. एंड इट्स रियली सजेस्टेड कि आप लोग, ओके, सो वन रीज़न वाई आईड से कि लाइक why their team is inspiring is कि because their designer, he was only in first semester I believe. उसका नाम मनान है. Yes, exactly, तारे ज़मीन पर जो main character होता है Ishan, he has dyslexia, so they made an app regarding that as well. So Manan was in first semester and he was the one who designed a lot of aspects of the project, right? So इसी तरीके से it's important to just get participate in that कि आप at least experience ले सको कि यार ये आप team project और इतने बड़े scale का project बनाते कैसे हो. And they also made their application in Flutter, which they learned along with the entire project making time. तो please don't be hesitant कि यार अगर हमें चीज़ नहीं आती तो हम आगे कर नहीं सकते. Exactly, first semester, he's very talented. So, and that's a really good initiative he took, right? तो उसी तरीके से please do join the session tomorrow. जितने सवाल पूछने हैं आप लोग पूछो, जो छोटी मोटी चीज़ पूछनी है. As their lead would be their lead from last year, Muiz, he was the one who led the team, and their lead from this year, Abdullah Ayaz, he was also part of the team. Both of them will be answering your questions and answering your queries. They will be guiding you from start to finish. कि like जो full process था development का, अपने प्रोजेक्ट बनाने का, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व थी, एवरीथिंग. तो विल बी शेयरिंग द लिंक इन द व्हाट्सएप ग्रुप रात तक इंशाल्लाह. एंड सो बी श्योर टू जॉइन द सेशन. आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी अ यूट्यूब लाइव स्ट्रीम, तो ईजी सीन होगा. आप लोग बेशक यूट्यूब कमेंट्स के अंदर साथ साथ पूछ लेना. बाकी यू कैन वॉच द डेमो डे, मैंने प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर की है ऊपर. उसमें यू विल गेट टू सी ऑल द विनर प्रोजेक्ट्स, जो भी सारे प्रोजेक्ट्स विन हुए थे. यू कैन सी द डेमो ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स. उससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है. एंड अगेन जो गूगल टेक्नोलॉजीज यूज़ करने का कहा है, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड गाइज. अगर आप ट्राई करोगे यू विल डेफिनेटली डू इट. आई वॉज यूजिंग टेंसरफ्लो फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं आती थी, बट आई एम डूइंग प्रिटी वेल विद इट राइट नाउ. तो प्लीज़ इसलिए मत बैठे रहना कि हमें आता नहीं है या वी आर नॉट गुड इनफ. ठीक है, ट्राई लाजमी करना, बिकॉज विनिंग इज़ नॉट द गोल. अगर आप नहीं भी जीते यू विल स्टिल गेट टू समवेयर बेटर. एंड आई रियली वांट कि आपसे पार्टिसिपेट करें. आई वांट टू सी सो मेनी टीम्स पार्टिसिपेटिंग दिस ईयर इंशाल्लाह. मैं खुद भी कर रही हूँ, so you guys can directly hit me up as well. So I have a question. जी
आपने कहा था कि मैं जब भी अपनी टीम बनाऊंगी तो उसमें एक डेवलपर, एक डिजाइनर, एक कंटेंट राइटर और एक बंदा होना चाहिए जो टीम को मैनेज कर रहा हो। लेकिन अभी मैं टीम बना रही हूँ और मेरे नॉलेज में कोई लोग भी नहीं है जो कि इस चीज में एक्सपर्ट हो, यानी कोई डेवलपर एक्सपर्ट हो या कंटेंट राइटर हो या कोई मैनेजर हो। तो हो सकता है कि 4 ऐसे ही लोग आएँ जो बिल्कुल न्यू हो, लेकिन वो लोग साथ-साथ अपनी ये सारे रोल्स एक-एक ले लें और वो उस रोल को सीख लें, उस लिहाज से। या फिर पहले से किसी एक्सपर्ट बंदे को आपकी टीम में होना चाहिए जो कि उस चीज़ को उसको पहले से आती है, क्योंकि 2 महीने का टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं है और फिर सबके साथ यूनिवर्सिटी भी होती है, उसको भी मैनेज करना होता है। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको एक्सपर्ट बंदा चाहिए एंड इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल किसी लूज़र को उठा लो। जस्ट यू शुड नो कि ये बंदा है, ही और शी हैज़ द पोटेंशियल, और इसके साथ मिलके अगर आई एम लर्निंग तो हो जाएंगी चीज़ें मैनेज, ठीक है। इस तरह से एंड लुक एट योर क्लास फेलोज, लुक एट योर सीनियर्स, योर जूनियर्स, यू माइट नो पीपल, और अगर नहीं पता है कि कौन किस स्किल में काम करते हैं, टॉक टू देम, टॉक टू योर क्लास कि यार आप इस करते हो, डू यू नो समवन हु वर्क्स इन दिस फील्ड, एंड देन फाइंड देम, टॉक टू देम, इस तरह से देन यू प्रपोज द आइडिया एंड टेल देम कि दिस इज अ चैलेंज आई वांट टू वर्क ऑन, आई एम गोइंग टू बी द टीम लीड, आई वांट अ डिजाइनर और आई वांट अ कंटेंट राइटर, आई वांट समवन टू असिस्ट मी। तो इस तरह से कम्युनिकेट विद पीपल अराउंड यू एंड मेक अ टीम, ठीक है। यू डोंट नीड एन एक्सपर्ट, और ऐसा भी नहीं कि किसी लूजर के साथ करने लग जाओ, ठीक है। यू शुड नो कि द पर्सन इज विलिंग टू लर्न विद यू, पर्सन इज विलिंग टू वर्क विद यू, सो दैट्स व्हाट मैटर्स। I think Shazib bhai also wants to Please add a little. add something. Yes. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Walaikum salam. वो पार्टिसिपेट पहले से मैं सबसे बस ये बात कहना चाह रहा था कि पार्टिसिपेट क्यों करें ना। देखें, ये वाली अपॉर्चुनिटी जो है ना आप लोगों के पास, ये डिग्री जब तक चल रही है ना तब तक ही है कि डिग्री के ड्यूरेशन में ही आप किसी जीडीएससी टीम का पार्ट रहोगे। जैसे डिग्री कंप्लीट होगी आप जीडीएससी की टीम के पार्ट नहीं रहोगे, फिर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे कभी दोबारा इसमें। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो टाइम लिमिटेड होती है ना उनको कैश कर लेना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें पार्टिसिपेट क्यों करें ना अभी। बस यही बात कहनी थी। एग्जैक्टली, आई कैन टोटली रिलेट। ये मेरा फाइनल ईयर है और मुझे इतना फील हो रहा है ना कि इस दफ़ा मैं पार्टिसिपेट चलो कर लूँगी, लेकिन यार एक और साल अगर होता मैं एक और दफ़ा पार्टिसिपेट करती, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने अप्लाई नहीं किया था। आई थॉट कि आई हैड सम अदर थिंग्स गोइंग ऑन, सो बस मैंने अप्लाई नहीं किया, और आई डू हैव अ रिग्रेट कि मैंने नहीं किया। वैसे थर्ड सेमेस्टर के कितने स्टूडेंट्स हैं, थर्ड या सेकंड सेमेस्टर के? ओके यार, तुम लोग ना अभी से अप्लाई करो, ट्राई टू बिल्ड अ सोल्यूशन, और नहीं भी जीते तो नो प्रॉब्लम, ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर एंड देन ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर। तुम लोगों के पास अभी 3 साल पड़े हैं, तो यू हैव 3 ट्राइज। सो हमाद इज फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर, हमाद यू हैव 4 ट्राइज, लिटरली 4 ट्राइज। तो वेस्ट मत करना, डू ट्राई, डू पार्टिसिपेट, एंड इंशाल्लाह कर लोगे तुम लोग। यूटी की आवाम टैलेंटेड है, बस छुप छुप के बैठी रहती है। और पता है क्या, देखो आप लोगों के पास एक और बात भी है, अगर आप लोगों को नहीं किसी चीज़ का पता तो अपने सीनियर से जाके आप हेल्प ले सकते हैं ना। आप जाके डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट करें, पूछें। तो ये जो है डर का और एक चीज़ थॉट में सिर्फ रहने के लिए कोशिश करें, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तरफ जाएं, तो वेज अपने आप निकल आते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से सब लोगों को। So Abdul Rafi, my composition was कि I and I was managing day-to-day activities. I was managing the progress of all of my team members. I was managing the content. I was writing blogs for my website. इसके अलावा I was also helping in the front-end development, somehow in the back-end development. But developer जो थे, he was Afzal from our session, and जो designers थे मेरी website के, he was Ahmed from my session. So this was my composition. Mariam, are you trying to say something? क्योंकि I cannot hear you. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड। अक्सा, आपका क्वेश्चन था कि लाइक जो जीडीएसी टीम वाली चीज़, तो बीइंग अ मेंबर बेसिकली मींस कि जो हम लोग का ये कम्युनिटी पेज है ना, इफ यू सी द पेज है जॉइन अस वाला ये बटन, बेसिकली जस्ट जॉइनिंग द कम्युनिटी पेज ओवर है, इसका मतलब होता है कि यू आर अ मेंबर ऑफ द जीडीएसी टीम। उससे ज़्यादा और वो कोई नहीं है। तो जस्ट बी श्योर कि
जो भी आपकी टीम में पार्ट होगा, that person is a part of a GDSE via this community page, यानी वो community member है, because only the community members they're allowed कि वो आगे जाके participate करें. ठीक है guys, तो that was all from my side. अगर कोई questions हैं तो please कर लो. We also have like 2 more sessions tomorrow and उसके बाद भी, तो you will be hopefully getting to talk to the teams directly. तो hopefully वहाँ पे भी आपकी queries sort हो जाएंगी. And if you have any questions from me, मुझसे भी पूछ लो. I'm also available in the department as well. उधर आ जाया करो. Any questions? और कोई questions हैं तो पूछ लो. यार mic unmute कर लो. ये chat बहुत annoying लगती है मुझे. फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है सेशन के बाद बहुत ज़्यादा सवाल नाजिल होंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल कर लेना. GDSE UET का जो ग्रुप है ना हमारा, वहाँ पे कर लेना क्वेश्चंस, ठीक है? अगर बाद में भी आते हैं तो someone will answer इंशाल्लाह. Thank you Rida, thank you for joining. Will you guys update about the session in WhatsApp group? Yes. Thank you Bilal. Rida is from Punjab University. Yes, I think Hamad भी जो join जिससे किया था, Hamad bin Sajid, he's also from Punjab University. Thank you for joining. Thank you all for joining actually. और अपने फ्रेंड्स को भी बताना जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया. टेल देम इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और ये कि अप्लाई करें. डू पार्टिसिपेट. And one more thing, we'll try कि आगे हम sessions जो arrange करवाएं. We do get teams that obviously won and they have had the mentorship as well. So you get to talk to those members. And फिर अच्छा last thing, आप लोग LinkedIn वगैरह ज़रूर use करो. And just directly contact the people who have previously won prizes within the solution challenge. Just send them a connection request on LinkedIn. If you do get connected, send them a message कि अच्छा, can we get a bit of your time to just ask a few questions? Because आप उन लोगों से जो पूछोगे जिनकी directly mentorship भी हो चुकी है from Google, they will have a lot of good ideas and good, you could say, suggestions कि आप किस तरीके से अपने project को बेहतर structure कर सकते हो. Because they've gone through for example, Sami Baji, she has gone through the entire process. She knows where she made the mistakes and then she can obviously guide you better कि how not to make those mistakes, ताकि आप जितना efficiently अपना काम कर सको आगे. काफ़ी मैंने लिंक्डइन में मैसेज किया सर, मेरा इतना अच्छा तजर्बा नहीं रहा वहाँ पे. मतलब मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड मैंने 20 से 25 लोगों को मैसेज किए थे, मतलब मुझे गाइड कर दें इस ट्रैक पे क्या करना है, कौन कौन सर्टिफिकेशन मुझे चाहिए होंगी अपनी फील्ड से रिलेटेड. मेरा 20-25 में से मुझे 5-6 ने जवाब दिया था, लेकिन उन 5-6 ने अच्छा जवाब दिया था. तो मेरा यही होगा कि अच्छी तरह ढेर सारे लोगों को करते हैं, उनमें से कुछ का जवाब आ जाएगा. मतलब मैंने एक ही मैसेज पर कॉपी पेस्ट करके सबको कर दिया. अब यही होता है. गॉट अ गुड रिस्पांस. पता है मेरे साथ क्या हुआ था? एक दफा आई टेक्स्टेड 27 people एक ही मैसेज कॉपी करके, बिकॉज दे वर फ्रॉम द सेम फील्ड, आई हैड द सेम क्वेश्चन. एक का भी रिप्लाई नहीं आया था मुझे. ऐसा भी हो जाता है. बट यू नो व्हाट्स बेटर, हाँ तुम्हें रिप्लाई आया, दैट्स गुड. व्हाट्स बेटर कि अगर आप कोई पोस्ट पढ़ रहे हो ना, डायरेक्टली टॉक इन द कमेंट्स, बिकॉज दे रिस्पॉन्ड एंड अदर पीपल आल्सो रिस्पॉन्ड. ठीक है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है. And I have also dropped my LinkedIn in the meeting chat. You guys can connect with me as well, क्योंकि मैं अपनी जब मैं पार्टिसिपेट करूँगी इस दफ़ा इंशाल्लाह, I will be posting updates from my progress as well. तो तुम लोग भी करना, ठीक है? And if you guys do have any questions, तो सीधे GDSE वाले ग्रुप पे मैसेज कर दिया करो, because it may help someone else as well. किसी और की क्वेरी हो सकती है that they're not asking. हाँ मरियम, yes. हाँ, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही. आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही थी, लेकिन आई थिंक आपने यही पूछा ना कि फ्लटर ही सिर्फ ज़रूरी है या कोई और भी अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, राइट? हाँ, तो इट डिपेंड्स. व्हेन वी टॉक अबाउट गूगल टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करना अपने सोल्यूशन में, उसका ये मतलब नहीं है कि लाइक आप सिर्फ फ्लटर वगैरह यूज़ करो. जो भी आपको लगती है ना टेक्नोलॉजी जो आप सीख सकते हो, बस कोई ना एक गूगल का एलिमेंट आपके ना उस
सोल्यूशन के अंदर होना चाहिए। तो इफ़ यू मेकिंग अ वेबसाइट फॉर एग्जांपल, आप समझते हो कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपकी नहीं है, इफ़ यू मेकिंग अ वेबसाइट, आप बैकएंड अपना फायरबेस के अंदर कर दो, या इफ़ यू ऑलरेडी मेड द वेबसाइट इन सम अदर टेक्नोलॉजी, आप उसकी डिप्लॉयमेंट जो है वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर कर दो। या अगर आप एआई मशीन लर्निंग साइड पे जा रहे हो, यू कैन यूज टेंसरफ्लो फॉर दैट। तो आप किसी न किसी इस तरीके से आप गूगल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हो। इफ़ यू आर डूइंग डेवलपमेंट इन एंड्रॉयड, आप कॉटलिन की यूज़ कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो बहुत ही फेमस स्पेसिफिक्स हैं उन्हीं की तरफ जाओ। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल या आपको लगता है कि आप इतनी जल्दी नहीं सीख पाओगे, तो जस्ट यूज समथिंग जो आप समझते हो कि हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर मैं सीख सकता हूँ या मैं सीख सकती हूँ। एंड इफ़ आई डू फाइंड सम जो हैंड्स ऑन लैब्स हैं जो कि आप साथ साथ सीख सकते हो, आई शेयर द लिंक्स विद इन द GDSE, ताकि जो थोड़े बहुत बेसिक्स आप वहाँ से पिक कर लो। एंड आई ऑल्सो शेयर रिसोर्सेज रिगार्डिंग फ्लटर वगैरह, सम यूट्यूब चैनल्स, तो आप उधर से भी बट गाइस ये तभी शेयर करेंगे जब आप हमें बताओगे कि यू आर वर्किंग ऑन दिस एंड वुड हेल्प इन दिस। अगर आप टेंसरफ्लो पे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो एंड यू टेल अस कि हमें टेंसरफ्लो पे हेल्प चाहिए, तो ही वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द रेलेवेंट हेल्प, ठीक है? तो डू लेट अस नो, ताकि इफ़ यू नीड हेल्प वी कैन हेल्प यू आउट। Bilal as did Bilal, did you participate in the solution challenge before? If you're still in the call with us. Yes, I did. Our project was based on fintech. Oh, nice. Well, you see, if you're a part of Rafi, but if you're a part of GDSE, it is a good initiative कि आप solution challenge के अंदर participate करो. Yes, I think बिल्कुल अगर आप GDSE में नहीं भी हो, if you are just a part of the community and you got to know कि Google Solution Challenge होने जा रहा है, तो आप अपने skills को पॉलिश करने के लिए, टेस्ट करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। You got a lot of learning opportunity from that. आपको मैनेजमेंट का पता लगता है कि आपने टाइम डेडलाइंस कैसे मैच करनी है, और इसके अलावा अगर आपके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों का कठा बढ़ना है तो उसे कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है। तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये चीज़ होती है, आप ये चीज़ें सीख जाते हो कि आपको नए आइडिया निकाल के फिर उसको डिफेंड करने का तरीका आ जाता है। सो अल्टीमेटली इट हेल्प्स यू टुवर्ड ग्रोइंग योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एज वेल। आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी वो चीज़ लेके जा सकते हो, या आप अगर बहुत जूनियर हो तो आप वहां तक पहुंचते पहुंचते इस एक्सपीरियंस को वहां कैटर कर सकते हो। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इसके अलावा भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, बट गूगल सोशल चैलेंज हैज सम डिफरेंट प्लेस हर किसी के दिल में। एंड आई रिमेम्बर आई पार्टिसिपेटेड ट्वाइस इन इट। इस दफा मैंने, जब मैं लीड था तब भी किया था, एंड उससे पहले जब इकरा का नहीं, जैन का जब दौर था, तब जैन के दौर में आई वाज अ डिजाइनर इन हिज टीम, तो तब भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। बस इंशाल्लाह कोशिश हमने इस दफ़ा यही करनी है कि GDSE UT टेक्सला की तरफ से भी टीम्स पार्टिसिपेट करें, बिकॉज वही बात, आई फील लाइक द एक्सपीरियंस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट वही कि इफ़ यू विन और नॉट, क्योंकि आप उससे सीखते ही बहुत ज़्यादा, एंड यू लर्न कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए कैसे कुछ बनाते हो। So guys, if there are any more questions, just drop them in the chat. Otherwise, we'll be ending the call. And बाकी, if you do have any more further questions, you जो groups हैं, group WhatsApp वाले GDSE के, you can join them. Community page आप join करें, and we'll be sharing the links to tomorrow's session inshallah. And वहाँ पे आप अपनी तरफ से आज research करें बैठ के proper, have your questions ready जो आप कल पूछो, ताकि आपको अच्छा खासा basic idea हो जाए कि अच्छा ठीक है, how you're going to start towards your project. And if furthermore जो भी कोई भी queries वगैरह हो, all of us are here to help you out. And thank you so much for joining, and thank you so much to Samir Baji. She helped us a lot with her experience and all that. And see you guys tomorrow, inshallah. Allah Hafiz, everyone.